Yes. May it please, Your Lordship. Your Lordship, these are connected matters. In respect of their, in most of them, Your Lordship, the challenge is to the appointment of the. दो सवाल पूछे थे वकील साहब, पीछे बैठ के थोड़ा काम होगा. No, he had another. The Joint Commissioner is here, Your Lordship. Where is the Joint Commissioner? Call him. When was this reorganization of PSCC was started? 1 मार्च 2023 से स्टार्ट है. 1 मार्च 2023 है. तो कब तक पूरा होगा ये रीस्ट्रक्चरिंग? क्या पॉलिसी है इस बारे में? इसमें सर आप अपनी कन्वीनियंस से करेंगे क्या? रीस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या सिद्धांत है, क्या पॉलिसी है? सर इसमें कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कमेटी बनेगी. कलेक्टर को बुलवा लेते हैं अगर आप कहना है कि कलेक्टर ने नहीं किया तो. अलग अलग जिलों में सर प्रोसेस. अलग अलग जिलों की नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं. आपके जिले, आपके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? सर 8 जिले सर. हाँ, तो 8 जिले में कब तक ये क्या पॉलिसी निर्णय था कि कितने समय में ये रीस्ट्रक्चरिंग पूरी करनी है? एंड हाउ लॉन्ग यू कैन पोस्टपोन इलेक्शंस इन द गर्भ ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग? My question was specific in the morning. It is as clear as it was during the first session. सर जबलपुर संभाग में सर अलग अलग जिलों की स्थिति सब मैं बताऊं. डिंडोरी में सर जैसे कि 21 सोसाइटियों का आइडेंटिफिकेशन हो गया है. और इनमें सर धारा 16 का नोटिस जारी हुआ है. इसमें आम सभा होना बाकी है सर. जबलपुर में सर 4 सोसाइटियों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है सर. कटनी में सर काम कब पूरा हो जाएगा, उसके लिए क्या समय सीमा तय की गई है? मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ. आपने बोला कि मार्च 2023 में, अभी अगस्त खत्म हो रहा है, सितंबर आ रहा है. विभाग से जो समय सीमा दी गई थी वो सर सितंबर तक दी गई थी सर. 30 सितंबर 23, 6 सितंबर 9 सितंबर तक सर. 9 सितंबर तक. अब 9 सितंबर तक रीस्ट्रक्चर पूरा करा लीजिए, उसके 1 महीने में चुनाव करा लीजिए. क्या कि हम पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर देते हैं अभी सारी. आपकी अंडरटेकिंग नोट कर लेते हैं कि विभाग ने 9 सितंबर तक की समय सीमा रीस्ट्रक्चरिंग के लिए डिसाइड की थी. 9 सितंबर तक रीस्ट्रक्चरिंग पूरी कर ली जाएगी. उसके बाद में जो है 30 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की कार्रवाई पूरी की जाएगी और उसके 30 दिन के भीतर इलेक्शन करा लिया जाएगा. टाइम टेबल डिसाइड हो गया. 9 सितंबर से 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर से 9 नवंबर. उसके पहले आप कार्रवाई पूरी कर लीजिए. सर बहुत जिलों में सर अभी हमें नहीं मालूम. अगर नहीं हुआ है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी. यू कैन नॉट पोस्टपोन द थिंग टू सूट योर कन्वीनियंस और टू सूट द कन्वीनियंस ऑफ योर मास्टर्स. हर कोऑपरेटिव बॉडी का बेसिक फंडामेंटल राइट है कि उनका इलेक्शन हो, टाइम से गठन हो बॉडी का. नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. एंड योर कलेक्टर विल ऑल्सो नॉट बी स्पेयर्ड. इफ ही इज एट फॉल्ट ही विल ऑल्सो फेस द म्यूजिक. May I? जी. May I submit, Your Lordship? In fact, Your Lordship, there are about 4,544 PAC societies in the entire state. Now, the elections to these, in some of these elections have taken place. In the others, elections have not taken place. There was a Government of India coordination meeting between the Government of India and all the states, and there was an order for restructuring, reorganization of these PAC societies. Where are the minutes of that meeting? Your Lordship, in a matter which is, in fact, the similar matter is seized by the Honorable Division Bench, and in that we have filed a detailed status report. I'm providing that, Your Lordship. In that matter, Your Lordship, we've filed a detailed status report in this regard, and taking note of this, Your Lordship. What is the गजट नोटिफिकेशन 24/1/23 का? पढ़िएगा उसमें क्या लिखा है 24/1/23 में गजट नोटिफिकेशन में. मध्य प्रदेश लेजिस्लेशन इतना दिस एक्ट में बी कॉल्ड मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट 2022. It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette. In section 49 of the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act, itna hereinafter referred to as the Principal Act. In subsection 7A in clause B in the second proviso after the word Central Society, the words Primary Agriculture Credit Cooperative Society shall be inserted. ठीक है. उसके बाद में in section 1 in the second proviso after the Central Society इतना in subsection 12 in the second proviso after इतना. तो जहाँ सेंट्रल सोसाइटी था वहाँ पर आपने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ दिया. ये अमेंडमेंट हो गया जनवरी 2023 में. उसके बाद वेयर आर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट?
Your Lordship, those minutes are not on record, but Your Lordship may kindly see in paragraph 5 in paragraph 7, Your Lordship. Paragraph 7, 7, page number, at page 3. page 3 of your status report. Ji. Yes. It is most humbly submitted that the answering respondents are committed to conducting the elections of the primary agriculture credit cooperative societies in the state of MP. It is submitted that currently there is one PAX for average 3 to 5 gram per तुम्हें बता दिया वो जी जी in furtherance of a coordination meeting held between the Government of India, Ministry of Cooperation and the states in September 22, it was observed in the meeting that for better governance of local self bodies and cooperatives. That we have understood. जी. The question to you is either you are not understanding the question or you are trying to circumvent it. Question to you is that when this decision, we are not challenging, this court has no authority to challenge your decision. You may form packs for even a one village or even cluster of Yes. certain colonies in a village, that is your discretion. Yes. When this decision was taken, why it has not been implemented and why elections are not taking place? In fact, You must have if the framed some timeline, time limit. yes, timeline was there, Where is Your that Lordship. timeline? That has been revised. Where is that timeline? That timeline at page 20. That Page has 20. subsequently been revised, Your Lordship, now. Let us see page 20. What does it say? Where is the revision? The revision, Your Lordship, is there. Your joint registrar is not aware of the revised timelines. He was giving this date 6/9/2023. No, he was aware, Your Lordship. Then why he made a statement in open court? I had not put any words in his mouth. No, he don't know. अब दीजिए रिवाइज टाइमलाइन दिखाइए क्या है ये? क्या क्या जस्टिफिकेशन है इस रिवाइज टाइमलाइन का? Your Lordship, in fact, what has happened, if the timeline is seen, Your Lordship, all the acts have to be carried out, the proceedings have to be carried out by each district. And it's as per even section 16(3), they are required to call for objections, then the Aam Sabha is to be टाइम लिमिट conducted. दी हुई है ना सब, ये सारी टाइम लिमिट बनाई हुई है, सबकी बनाई हुई इसमें क्यों नहीं हुई कार्रवाई? Your Lordship, that because be every ये आपकी रिवाइज गाइडलाइन आ गई 7/3/2024 तक की, तो आप 7/3/2024 के पहले चुनाव करा लेंगे. ये तो सर रिऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, बिकॉज दैट विल रिजल्ट इन अ कॉन्सिक्वेंशियल चेंज इन द वोटर लिस्ट ऑल्सो. ठीक है, तो 7/3 तक कर लेंगे ना आप ये सारी चीजें. जी पंजीयन उपरांत सदस्यों के अनुपात में उनकी आस्तियों व दायित्वों का बंटवारा करना जी, है, सब assets हो and जाएगा. liabilities ये 7/3 सब तक हो जाएगा. 7/3/24 तक हो आप जाएगा. उसके 30 दिन के अंदर चुनाव कराइए. जी लिखिएगा. ठीक है. As far as my case is concerned, my relief is in 2018 we have applied for election. ठीक है, वो लिख देते हैं Now, उसमें, लिख now देते हैं. that PIL, I have filed that PIL. The issue was that 45, apart from 45. We understand that why they don't want to conduct elections in cooperative societies, and Now- therefore they are in such a quandary. They say that our administrators are working in the society. नहीं, they are not. So, till We understand that why they want to kill democracy in the cooperative societies. Your Lordship, in fact, that meeting, in fact, the coordination meeting of You the have not government. brought anything on record. No, that If you would have, If your if you would have been fair, you should have brought that coordination committee meeting minutes on record. it is mentioned in the order subsequently passed, Your Lordship, in that Mentioning status. of that and the minutes, they are two different things. We'll place that also. Your No, we Lordship, will not have an some opportunity time. to place. Now we will say that you will conduct elections, you will complete the whole proceeding. There is an undertaking to complete it by 7/3/2024, and you will complete elections within 45 days thereof. Yes. देखिएगा. This whole bunch of you will complete the whole proceeding. There is an undertaking to complete it by 7/3/2024, and you will complete elections within 45 days thereof. Yes. देखिएगा. This whole bunch of petitions. Your Lordship, that With a I may, singular issue. if I may that- be permitted No. to bring all these facts on record. Now you have said you have already. Morning also, Your Lordship, we had sought time to bring all these facts Sorry, on record, Your Lordship. We had sought time for that. And you have not brought them, any one of them. आपको सब में हमने तो सुबह ऑफर दिया था 20-20 हजार रुपए कॉस्ट लगा के टाइम दे देते हैं. 24 केस लगे हैं. आप 4 लाख 80,000 रुपए जमा Sometimes so that they are only on I'll grant you record. time. I'll grant you time. I'm not seeking disposal. If you want time, I'll grant you time subject to payment of cost. And each case you pay cost. Let your joint registrar pay cost. And I'll grant you time.
or we'll say that this is the revised timeline and you will adhere to it and get the elections conducted within 45 days of this 7/3/2024. That is by end of the April 2024. लिखिएगा. Should they, then if I may be granted only 10 minutes time for seeking some instructions. What instructions? Because if it is an undertaking, then I'll have to. नहीं, I'm not saying undertaking. I'm saying that this is the document. Those directions may be then lost. In the नहीं, undertaking may not be recorded. This is the revised timeline. I'll say that. Please listen to the order now. लिखिएगा. You are appearing for whom? Court intervenor, Lawfirm, and item number 2. What is your locus? Lawfirm, we are the farmers and members who are associated with the. Unless this society is reconstituted, what is your locus? Lawfirm, our prayer very fair is to reconstitute the societies to So intervene. You cannot intervene. You should have filed an independent petition. You can intervene only to object to the relief claimed by the petitioner. So that we are objecting, Lawfirm. ठीक है, चलिए. Lawfirm, the Sorry. petitioners are functionaries. ठीक है, चलिएगा. लिखिएगा. And we are agreed by the action of the petitioner. तो आज ही बनवा लाया. आपके ऑर्डर के बाद फिर बना 29/8 आज ही है. हाँ, आज ही मुझे मालूम है भाई. आपको क्या लगता है अंकित जी ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पर? नहीं, आपकी वजह से क्या समझते हैं? आपकी वजह से बन गया सर. नहीं, हमारी वजह से कुछ नहीं बना है. हमें ये गलतफहमी नहीं है. फुल स्टॉप.